Assalamualaikum class, we are going to start our topic, that is how to calculate the oxidation number or oxidation state. So there are simple tricks that we can use to find out the oxidation number or oxidation state of an atom, ion or molecule. There are simple mathematical calculations to find out the oxidation state of an atom, ion or a molecule, and we will start with some examples. So first of all, we will discuss about the definition of oxidation state or oxidation number. What is an oxidation state or oxidation number? The apparent charge on an atom, ion or molecule is known as the oxidation number or oxidation state. For example, we can discuss about the sodium, chlorine, hydrogen. There are different elements on the periodic table that shows their charge. For example, sodium has a positive 1 charge, hydrogen has a minus 1 charge. Why sodium has the plus 1 charge? Because sodium loses 1 electron to become stable. Hydrogen sometimes loses 1 electron to become stable and sometimes gains 1 electron to become stable. When hydrogen gain 1 electron when it form a bond with the मेटल आयंस, ठीक है। मेटल एटम्स के साथ जब भी हाइड्रोजन अपना बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है? -1. एज यू कैन सी on at the first point, the sodium has oxidation state of 0 because it is in a free state, and the second point, sodium has a charge of +1. Then hydrogen have a charge of 0 when it is neutral in a free state, and then hydrogen have a charge of -1. Why it happens? There are some rules to assign the oxidation state or oxidation number. It can happen that the same element can have different oxidation states depending upon the number of bond that atom forms. ठीक है, तो apparent charge on an atom, ion or molecule is known as oxidation number or oxidation state. So the oxidation state of sodium will be +1, oxidation state of iron will be +3 or +2. ठीक है, so there are four different rules to write down the oxidation numbers on the elements, or how we can find out the oxidation number. First of all, in a free state oxidation number is 0. For example, हमारे पास कोई भी free element है, for example sodium, chlorine, fluorine. when in it is free state, अभी उसने किसी के साथ कोई bond form नहीं किया या उसने सिर्फ अपने ही दूसरे element के साथ एक bond form किया है, तो that will be in its free state. For example, sodium is in free state. क्लोरीन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरीन ऑलरेडी हमेशा गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रिएक्टिव है तो Cl2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इस स्टेट में उनकी ऑक्सीजन स्टेट जो होगी दैट विल बी 0. Second point is, in a charge state, oxidation number of ion is the charge number. For example, sodium loses 1 electron to become stable, so the charge on the sodium will be +1. So the oxidation number of sodium is +1, or oxidation state of sodium is +1. Similarly, hydrogen loses 1 electron, so the oxidation state or oxidation number of hydrogen will be +1. Chlorine gains 1 electron, fluorine gains 1 electron. All the halogens of group 7 all the elements of group 7 halogens always gains 1 electron to become stable, so they will have the charge or oxidation state of -1. फॉर एग्जाम्पल व्हेन हमने भी एग्जाम्पल डिस्कस की थी ना हाइड्रोजन वाली, कि हाइड्रोजन के पास कब चार्ज -1 होता है, तो हाइड्रोजन जब किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन और हाइड्रोजन, तो oxidation state or oxidation number of hydrogen will be +1. or when it form the bond with the metals, for example sodium, lithium, potassium, और हमें पता है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं metals because they are electropositive, they belong to group number 1a, so the oxidation state will be +1. then the hydrogen oxidation state of hydrogen will be -1. नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजेंस इज -1. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो हेलोजेंस हैं जो ग्रुप 7a है उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2. फॉर example calcium oxide, calcium belongs to group 2a, so the oxidation state of calcium will be +2. then the oxidation state of oxygen will be -2. oxidation state -2 क्यों होती है ऑक्सीजन की? क्योंकि ऑक्सीजन के पास होते हैं टोटल 8 electrons, 2 electrons in the first shell, 6 electrons in the second shell, so it requires 2 more electrons to become stable. That's why the oxidation state of oxygen is -2. So let's find out the oxidation states of different elements. Oxidation number of magnesium in magnesium oxide. हमें नहीं पता कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हमें इतना तो पता है ना कि ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारे पास ऑक्सीजन का है वो क्या है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम